अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडेज एट्थ लेक्चर ऑफ कानून शहादत ऑर्डर और आज का टॉपिक है अकम्पलिस। इसको शुरू करने से पहले मैं बताती चलूँ, अकम्पलिस को हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पढ़ेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको भी आसानी हो अकम्पलिस का क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन। An accomplice is a person who takes part in commission of offense. Accomplice is always unreliable person, for he is betraying his associates, but his evidence is nevertheless admissible on the principle that greatest offender would go unpunished if accomplice evidence were to be rejected. अकम्पलिस वो शख्स होता है जो जुर्म में हिस्सा लेता है, यानी कि शरीक जुर्म होता है। अकम्पलिस हमेशा नाकाबिल एतबार शख्स होता है, क्योंकि वो अपने ही साथियों को धोखा देता है और इन्हीं के खिलाफ बयान देता है। यानी इसके सबूत को बहरहाल इस असूल पर काबिल कबूल किया जाता है कि अगर अकम्पलिस के सबूत को मुस्तदर यानी रिजेक्ट कर दिया जाए तो सबसे बड़ा मुजरिम सजा से महरूम हो सकता है। Meaning of accomplice. Accomplice is a person supported to have directly or indirectly concerned in the offense, or accomplice is guilty associate in the crime. अकम्पलिस एक ऐसा शख्स जिसके बारे में समझा जाता है कि इस जुर्म में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ताल्लुक़ रखता है, जुर्म में शरीक मुजरिम है। अकम्पलिस के रेलिवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 16 and 190 QSO। Competency as witness. Accomplice is a competent witness against co-accused. Accomplice competent witness है अपने ही co-accused के खिलाफ। Exceptions. Evidence of accomplice is inadmissible in hudud cases. Accomplice hudud cases में unadmissible है। Presumption under Article 129B. Though competent, the court may presume that he is not worthy of credit unless he is corroborated in material particulars. Competent court ये फर्ज कर सकती है accomplice एतबार के लायक नहीं जब तक कि इसके बयान की corroboration नहीं हो जाती दूसरे एविडेंस से। Reason for corroboration of the testimony of accomplice or accused. Accomplice यानी कि जो शरीक मुजरिम है उसकी गवाही की तस्दीक की वजह। Accomplice may swear falsely in order to shift the guilt from himself. Accomplice जो कि शरीक जुर्म है वो अपने से जुर्म को हटाने के लिए झूठी कसम खा सकता है। An accomplice is a participant in crime. An immoral person is likely to disregard selection of oath. एक accomplice जुर्म में शरीक होने के नाते एक गैर इखलाकी शख्स तस्वुर किया जा सकता है जो कि हलफ पर भी झूठा बयान दे सकता है। Accomplice gives his evidence under burden or under such hope this will lead him to favor prosecution. Accomplice माफ़ी के तहत या ऐसी उम्मीद के तहत अपना एविडेंस देता है जैसे कि वो मुकदमा इसके फेवर में हो जाएगा। Accomplice evidence has to satisfy double test. Accomplice के एविडेंस को डबल टेस्ट से सेटिस्फाई किया जाएगा। His evidence must show that he is reliable witness. उसके एविडेंस में ये ज़ाहिर होना चाहिए कि वो काबिल यकीन गवाह है। It must receive sufficient corroboration. उसकी एविडेंस को sufficient corroboration रिसीव होनी चाहिए। Nature of corroboration. Corroboration evidence is some additional evidence showing that it is more probable that the story of accomplice is true and it is reasonably safe to act upon it.
تصدیقی ثبوت کچھ اضافی ثبوت ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اکمپلس کی کہانی جو وہ سنا رہا ہے سچی ہے یا نہیں، وہ اس پر عمل کرنا مناسب حد تک محفوظ ہے یا نہیں۔ ایکسٹینٹ آف کوآبریشن کی حد کہاں تک ہے؟ ایویڈنس آف accomplice is at least one material fact pointing to the guilty of the accused۔ accomplice کے ایویڈنس میں ایک حقیقت کم سے کم ایسی ہو جو ملزم کے قصوروار ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ requisites of evidence of accomplice: the statement of accomplice being a witness must be satisfactory, reliable and not exculpatory۔ اکمپلس کا بیان ایک گواہ کے طور پر تسلی بخش، قابل اعتماد ہونا چاہیے، نہ کہ قابل مزاحمت۔ Material particulars must be corroborated by a strong and independent piece of evidence۔ Material particulars ضروری ہے کہ corroborate ہونے چاہیے ایک strong independent piece of evidence کے ساتھ۔ Conclusion: an accomplice is a person who has taken part in the commission of the crime along with another or others. If an accomplice is arrested and thereafter has been given a pardon, he is referred to as an approver। Corroboration is necessary in case of testimony of an accomplice. The nature and extent of corroboration of accomplice evidence may necessarily vary with the circumstance of each case۔ ایک اکمپلیس وہ شخص ہوتا ہے جس نے گناہ کرنے میں حصہ لیا ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر۔ اگر اکمپلیس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے سزا سے کچھ رعایت مل جاتی ہے کیونکہ وہ اپروول دیتا ہے اور اس کے اپروول سے کورٹ کی مدد ہوتی ہے، اس لیے اس کی سزا میں کچھ حد تک معافی یا رعایت ہو جاتی ہے۔ اکمپلیس اصل آفینڈر نہیں ہوتا، اس نے صرف کرائم میں حصہ لیا ہوتا ہے اور اس کے بیان سے اگر اصل مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے تو اسے کورٹ پارڈن یعنی معافی دے سکتی ہے اور اس کی سزا میں رعایت ہو سکتی ہے۔ اکمپلیس کی شاہدی کی کوآبریشن ضروری ہے اور اس کی کوآبریشن کی ایکسٹینٹ ہر کیس کے حالات کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔